Assalamualaikum everyone. Welcome to another video lecture of chemical equilibrium. This is lesson 5 by Hamza. In this lecture we are going to discuss Lee-Chatelier's principle, which is the last SLO of this chapter. The statement of Lee-Chatelier principle is when stress is applied to a system in equilibrium, it tends to resist the stress in order to attain the equilibrium back. What does it mean that? When there is a reaction going on and the reaction is at equilibrium and you apply stress over it. What do you mean by stress? Stress means any change. The stress can be change in temperature, change in concentration, or change in pressure. Whenever you change any of the following, you call it stress. Whenever you apply stress on the system in equilibrium, the system tends to oppose that. It tends to change its condition back, its state back into equilibrium. That means that a system would always like to be in equilibrium. When any stress is applied, it wants to revert back to the equilibrium state. The first effect that we are going to learn is of a catalyst. What is a catalyst? The catalyst is a species which recovers at the end of the reaction without getting utilized in the reaction. यानी कोई भी ऐसी species या कोई भी ऐसा chemical, when you add it to the reaction, it does not get utilized in the reaction and it recovers back at the end. Reaction में हमेशा catalyst end में आपको उसी फॉर्म में मिलेगा जिस फॉर्म में आप उसको डालेंगे. यानी वो रिएक्शन करवाएगा, दो स्पीशीज़ के बीच में रिएक्शन करवाएगा, लेकिन एंड में वो अपने आप को रिकवर कर लेगा. कैटलिस्ट इज़ यूज्ड टू इंक्रीज़ द रेट ऑफ रिएक्शन. कैटलिस्ट किस तरीके से रिएक्शन को अफेक्ट करता है? वो करता है रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर. कैटलिस्ट हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देता है, जिसकी वजह से रिएक्शन स्पीड अप हो जाता है. कैटलिस्ट जो है वो किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है? इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी. Activation energy is the energy which is required to carry out a chemical reaction. कुछ reactions की activation energy बहुत हाई होती है, यानी उनको बहुत हाई एनर्जी चाहिए होती है रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए. उस दौरान अगर हम उनके अंदर सूटेबल कैटलिस्ट डाल दें तो वो कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देगा. एंड आफ्टर दैट द रिएक्शन इज़ गोइंग टू प्रोसीड विद अ वेरी लो एक्टिवेशन एनर्जी. So a catalyst is very useful in the industry because it wherever the reactions require high activation energy, the catalyst lowers the activation energy and carries out the chemical reaction. So catalyst has no effect on equilibrium. You have to remember this. Catalyst has no effect on equilibrium. यानी equilibrium के अंदर catalyst का कोई effect नहीं होता, लेकिन हमेशा कैटलिस्ट का जो इफ़ेक्ट होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर होता है. तो कैटलिस्ट का नो इफ़ेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, बट इट हैज़ अ इफ़ेक्ट, अ पॉजिटिव इम्पैक्ट और इंक्रीजिंग इफ़ेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा बढ़ेगा कैटलिस्ट की वजह से. इक्विलिब्रियम स्टेट कभी भी डिस्टर्ब कैटलिस्ट की वजह से नहीं होगी. यू हैव टू रिमेंबर दिस. लेट्स लुक एट द ग्राफ. इन दिस ग्राफ you are shown with the reactants. ये reactants हैं और ये products हैं. अब हो क्या रहा है इसके अंदर, इन reactants को बहुत हाई एनर्जी चाहिए और इस एनर्जी का नाम क्या है? इस एनर्जी का नाम है एक्टिवेशन एनर्जी. ठीक है. सो इस हाई एक्टिवेशन एनर्जी पे प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है वो पॉसिबल कंडीशंस में, हमारी जो लैब के अंदर जो कंडीशन होती हैं या इंडस्ट्री के अंदर जो कंडीशंस होती हैं उसमें ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता. ठीक है. तो ये रिएक्टेंट्स को बहुत हाई एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए. जो पर्पल ग्राफ है आपको वो शो कर रहा है. लेकिन जब मैं इसके अंदर एक कैटलिस्ट ऐड कर देता हूँ, यानी यहाँ पर एक कैटलिस्ट मैंने ऐड कर दिया, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई? कम हो गई. ठीक है. पहले बहुत हाई था ग्राफ, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ पर आके जो ये एक्टिवेशन एनर्जी कम हुई है, इसका मतलब यहाँ पे क्या चीज़ ऐड हुई है? यहाँ पे कैटलिस्ट ऐड हो गया है. तो ग्रीन लाइन जो है वो वाला ग्राफ है जहाँ पर कैटलिस्ट ऐड हुआ है, और पर्पल लाइन नॉर्मल कंडीशन है या नॉर्मल सिचुएशन है जहाँ पे कैटलिस्ट प्रेजेंट नहीं है.
तो यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, जो डिफरेंस है, उसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, यानी द स्टेट एट विच यू ऐड अ कैटलिस्ट एंड द एक्टिवेशन एनर्जी has lowered down. Okay, that is called transition state. So whenever you add a catalyst, the activation energy lowers down. Let's look at the change in concentration that we discussed. So whenever you change the concentration, the equilibrium changes and it is disturbed. So what is the effect of concentration? Let's suppose I increase the concentration of the reactants. What is going to happen if you increase the concentration of the reactants? Your equilibrium will shift forward, in the forward direction. That means you're going to get more product and your reactants will be utilized more if you increase the reactant concentration. If you increase the product, you're going to have an opposite reaction, an opposite change, which is backward shift. And what is going to happen in that case? When your products start to increase, so the reaction shifts backward and you're going to get more reactants. The third condition is decreasing reactant concentration. So increasing reactant concentration का opposite है decreasing reactant concentration. Obviously वहाँ पे forward shift था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, backward shift. और इस तरीके से अगर आप reactant को, अगर आप product को कम कर दोगे तो आपका जो रिएक्शन होगा वो बैकवर्ड के बजाय क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, यानी पहली वाली कंडीशंस के ओपोजिट. तो अगर आप ये दो कंडीशंस याद रखते हो, तो आपको ये वाली कंडीशंस ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी, क्योंकि वो उसी की ओपोजिट है. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर नाउ. वी आर गोइंग टू लुक एट द एग्जांपल्स ऑफ the change in concentration, and further we are going to learn change in temperature and pressure and the effect of that on equilibrium. So we'll be meeting in the next class, in the next lesson, with all the remaining topics of the Lee Chatelier principle along with the examples. So stay tuned. Thank you so much.